ये जो आपका 3 साल वाला एक्सपीरियंस था, उसमें आपको प्रोक्योरमेंट के लिए जाना पड़ता था? जैसे आपने कुछ डिज़ाइन किया, सेट कुछ खरीदना है, तो आपको जाना पड़ता था या लोग होते थे वो आपने डिज़ाइन करके बता दिया कि ये चाहिए ये चाहिए? No, you'll be making everything, just going with the carpenter to get whatever raw materials are there. Travel to the main market, going to some very dingy areas. What I'm trying to explore here is, गरिमा, सुनने वालों के लिए कि थोड़ा सा काम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आपके लिए वो आप नहीं करना चाहती थी, लेकिन वहाँ पे भी आपने कुछ सीखा। तो मैं वो समझना चाह रहा हूँ कि वहाँ से by default, my 3 years of work became the foundation of who I am today. 100%. I highly recommend that people who want to pursue something very independent must do some work under someone for some time. Work in an organization for some time. If you want, आप बोलोगे आपको ऑर्गेनाइजेशन चलानी है अगर एक दिन, और अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन में कभी काम ही नहीं किया है तो आपको क्या पता आप कहाँ पे जा रहे हो? So some knowledge is required over here. So you need to enter organizations in order to understand what teamwork is, how leaders should operate, what politics are like, how to build relationships, whom to build relationships with, basic strategy, just to see how it's happening. You need to work in an organization, even if it means for 5 months, for a short period of time. But one does need to work in an organization for a short period of time to gain some expertise before they create one. Your expertise is product designing and making the product. The support functions are marketing, finance, ये सारी चीजें, right? My expertise is not making the product. Please, if you could. Sorry, I mean. No, my expertise is not selling the product. My expertise lies in selling what I'm very passionate about. Today, when I stand in a flea market, so we've actually we started off as a Dreamcatcher brand, and I'm not sure if you know this, but we started as a Dreamcatcher brand. We started doing jewelry 3 years ago. We're now doing apparel. We've just launched our apparel collection. From a Dreamcatcher to an apparel, there's no sync, if you think about it from an outsider's perspective. But because it's a bohemian space, we have managed to weave the entire story around, it's all bohemian. I'm doing this because I like to do it. I'm not doing this because I want to sell it. I'm doing this because I like this product. I am really fascinated by the product. So I'm saying, अगर मैं fascinated हूँ तो शायद आप भी fascinated होंगे. मुझे बेचना नहीं पसंद है, मुझे कुछ प्रेजेंट करना पसंद है कि मुझे कुछ मिला है and I've managed to create something really beautiful. Would you like to just see it? I'm just saying, I'm putting it out here. Definitely. मैं बेच नहीं रही. I don't want to be a saleswoman, and I'm not a saleswoman. That's why I say I'm not an influencer. I'm only sharing. I'm only sharing what I have created. खरीदना, आपको खरीदना है तो खरीदो, वरना आप ये भी बोल के जाओगे कि ये बहुत खूबसूरत है. That's also equally important to me. That's good enough. I was trying to explore क्योंकि मैं I think I understand the artist Garima a little bit now. मैं ये समझना चाह रहा था the entrepreneur Garima क्या क्या फंक्शंस हैं वो संभालती हैं और क्या क्या उन्हें लगता है, बिकॉज यू आर सो कंफर्टेबल विद नॉट नोइंग थिंग्स एंड एडमिटिंग कि ये मुझे नहीं पता, बट मैं खेलते खेलते सीख जाऊंगी और जिस दिन सीख गए उस दिन मैं रूल्स बनाऊंगी. तो मैं ये समझना चाह रहा था कि अगर एंड आई एम विथ यू व्हेन यू से आई एम पैशनेट अबाउट इट, आई एम शेयरिंग दिस, बट एज अ बिजनेस आप अगर देखें तो बेचना एक फंक्शन है, हिसाब किताब भी एक फंक्शन है. कई बार ऐसा होता है कि जब नंबर्स अगर ठीक है लाखों में है तो ठीक है, अगर नंबर जब करोड़ में जाएंगे आपको एक बंदा हिसाब किताब के लिए ही चाहिए, right? और अगर and the reason I'm asking this is a lot of young people who are look at you and say कि ये मैं कर सकती हूँ, उन्हें ऐसा लगता है ये सब आता है इनको सब ये 19 की थी तब से सब ये सीख के आई हैं. They don't know that you are also struggling, मतलब or you have also struggled and till today there are things that you don't know, right? So I was trying to explore कि how do you manage that ambiguity and ignorance. जैसे मुझे first thing is to always know that है ना, मेरा इंटेंशन समझ गए आप. I'm not questioning the no the fundamental story over here is to always go with the belief system that आपको कुछ भी नहीं पता है. आपको वही सोच के चलना है जिंदगी में, आपको कुछ नहीं पता है. और आप सिर्फ whenever I meet anyone, whether it's my accountant, when I'm sitting, the questions are very naive and innocent, and they are sometimes very groundwork questions, very simple basic questions. And I will continue to ask. I'm saying the only way for me that has worked in life is to ask. Ambiguity में जी के कुछ नहीं होगा. Assumption में या
without questioning you will not learn anything. You have to question. So who takes care of my accounts? I only take care of my accounts. Am I doing a great job? Probably not. You know, but am I willing to learn? Yeah. If I've made a mistake, do I have the bandwidth to pay a price for my mistake? Yes. Simple. You're not going to be great at everything. See, you have to accept that. And I know. So I'm generally also not very good with accounts. But I'm open to feedback. I'm open to understanding if I've screwed up somewhere, I've goofed up somewhere. I'll rectify it. But that's something I do along the way. It's not something that I know I'm not perfect at this. It's not my strength. I think one of the bigger things with artists and entrepreneurs is the fact of the monetization. The money is what baffles you. You know, it's too much. आर्टिस्ट को आर्ट बनाने को दो तो वो बनाता रहेगा. बट अकाउंट्स की बात करो तो वो सब थोड़े से हम लोग हिल जाते हैं. You need to start becoming okay with this energy of money. Treat it as energy. Don't get baffled by it. It's okay. मकसद भी वही था पूछने का कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि मैं नहीं शुरू करूंगी कुछ जब तक मुझे ये 1 2 3 4 5 चीज़ें समझ में नहीं आ जाती, क्योंकि करूंगी तो नुकसान हो जाएगा, वक्त का भी और पैसे का भी. राइट. मैं उन लोगों Every learning will have a price to pay. It's a part and parcel of it. Have I lost money along the way? Of course I have. How do I see it? I see it as a way of saying कि अगर मैं MBA करती बहुत लाख हो जाते तो सस्ते में हो गया. It's just that. It's just that, right? If I would have gone abroad to study तो करोड़ों चले जाते. So अगर मैंने कुछ गलती कर दी along the way and I've lost some money, that's the price I pay for learning. खत्म हो गई बात. उसमें गिल्ट को लाने की कोई बात ही नहीं है. आप सबक सीखो और आप आगे बढ़ो. Loss is for sort of अगर उसे reframe करूँ मैं तो loss is your cost of education. 100%. सीखने के लिए वो पैसा दिया है, वो नुकसान नहीं है आपके धंधे का. राइट. 100%. Agreed. पानी. I'm so sorry मैंने पहले पूछा नहीं, मुझे बुरा लग रहा है इतना कि आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हुआ. एक तो हम थैंक यू करीबा हम शुरू कर रहे हैं ना, अभी हम भी नए हैं, सो इसलिए भी मैं इतना रिलेट कर पा रहा हूँ कि ऑफ कोर्स बिजनेस में तो मैं ठीक है सब जानता हूँ, लेकिन इस दुनिया में मैं नया हूँ, तो हर एक चीज़ जो लगती है इसमें वो मेरे लिए पहली बार हो रही है. तो मैं फिगर आउट करता हूँ कि अब कैसे करना है, क्या करना है. एंड सेम चीज़ मुझे नहीं पता, लेकिन आई विल फिगर थिंग्स आउट. मतलब वक्त प्रॉब्ली 6 महीने या 6 साल लगेंगे, बट आई विल फिगर थिंग्स आउट. लोग कर रहे हैं ना, सब लोग कोई डे 1 से सीख के थोड़ी आया है. The goal is to learn. The goal is not to get perfect. If you believe that perfection can be achieved, it is sheer ignorance. The goal is to learn. So if you are learning in this moment, that's it. For me, am I learning every day? My goal is achieved. You know, when you are asking me a question saying how much money do you wish to make, do I have enough money so that this is going to sound a bit funny, but at Soulworks, we have several people that will step into the shop saying, मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब दे सकते क्या? किसी को ना बोल सकूं और सबको कुछ जॉब दे सकूं, उतना पैसा अगर मेरे पास है और उतना स्किल सेट है कि मैं क्रिएटिवली कुछ उनके लिए सोच सकूं, that makes me very happy. To be able to find something for anybody. I have a domestic help who was telling me that I have a son's education to pay for. She's my घर का domestic helper. Absolutely love her. Absolutely love her. Beautiful person. Beautiful human being. And I said, how can I be there for you? And she said, मुझे पैसा कमाने के लिए कुछ चाहिए, but मुझे घर से करने के लिए कुछ चाहिए. And I said, ज्वेलरी कर पाएगी? She said, आप सिखाओगे तो कर पाऊंगी. I said, करो. आज उसकी बरकत से that entire ज्वेलरी का लाइन वो सेट हो गया है. आज वो नहीं, वो उसके और 3 रिलेटिव्स को साथ में बैठा के करती है घर पे. वो ग्रुप बढ़ता ही जा रहा है. So for me it has always been a matter of, do I have enough to share with other people around me, and so that I can empower more people, I can absorb more people. कि कोई अगर आए दरवाजे पर और बोले कि यार आपके पास जॉब है क्या, तो मुझे ना बोलने की नौबत नहीं आनी चाहिए, मेरे पास हाँ बोलने की हिम्मत होनी चाहिए कि कुछ तो उनको दो, उनके कैपेसिटी से जो मिलता जुलता है. Some time ago we had some woman who makes rotis. हमारे घर के आसपास एक there's a area where she works, and she said some more? That's fine. She said मैं रोटी बनाती हूँ
मुझे घर पे करने के लिए कुछ चाहिए बिकॉज रोटी बना के हाथ मेरे रह गए, मैं अब बूढ़ी हो रही, मुझसे नहीं हो पा रहा है। So, ठीक है, काम सीख लो, आ जाओ। Her entire family today in the evening, they all sit, they make. Today she's come to a point when she's planning to leave that job, planning to do this full time, right? That makes me happy. To know that we can find something for everybody, and that we are attracting only nice, happy, positive people. That's important. You know, Karima, we are from opposite worlds. No? I come from a world where numbers, million, billion, ये सब मायने रखता है, और I see a very human aspect in what you are doing. आपका हर जवाब ना, कहीं भी मुझे नंबर नहीं मिले, but you say कि मुझे इतना करना है कि कोई आके काम मांगे तो काम दे सकूं मैं, है ना? It's so for me it's, you know, I'm having dissonance कि कैसे हो रहा है ये? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be.